Assalamu alaikum. Today we'll talk about control and coordination from chapter number 3, and first we'll go for simple terms that are relevant to this chapter. Right? First is stimuli. The changes in the environment to which an organism respond are known as stimuli. कोई भी ऐसे environment में changes जिसको कि living organism respond किया करते हैं उसको हम stimulus कहते हैं, and the plural word is stimuli, right? For example, heat, cold, sound, smell, and all these stimuli are responded in the form of movements of the body, right? The second term is coordination. Whenever we go for a proper response to a stimulus, many organs in the body work together, and the working together of various organ in an organism produce a proper response to to a stimulus, and the process of working different organs together is known as coordination, right? And in animals, this control and coordination is done by nervous system and endocrine system, right? And in plants, control and coordination is done by chemical substances, and these chemical substances are known as plant hormones, or also known as phytohormones. Phyto mean plants, right? Phytohormones, that is the hormones of plant, right? So first we'll go for the coordination in animals. In animals, control and coordination is done by nervous system and endocrine system. What nervous system is? The nervous system consists of three main sections, that is brain, spinal cord, and the nerves. Nerves are further divided into different types, right? First we'll go for the receptors. What these are? Receptors are the sense organs which receive the stimuli and passes the message to the brain or spinal cord through the sensory nerves. कि वो ऑर्गन्स जो कि स्टिमुलस को या इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करते हैं और उससे रिलेवेंट जो मैसेज है उसको सेंड करते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और ये जिस चीज़ के थ्रू ये मैसेजेस जाते हैं, जिन नर्व्स के थ्रू ये मैसेजेस जाते हैं टू दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोज नर्व्स आर नोन एज sensory nerves, right? For example, photoreceptors. Photo mean light, and receptor mean the receivers or receiver of the impulse, right? So photoreceptors receive the stimulus from the eyes to detect the quality of light and the quantity of light, right? Phonoreceptors. Phono means sound. The receptors that are sensitive to the sound. So these are the receptor that detect the sound, and they are present in the air, right? Olfactory mean we are talking about the sense of smell. So they are relevant to the nose to detect the smell. Gustatory receptors, they are relevant to the tongue to check the taste of some food item, right? Tango receptors are present in the skin to detect the environmental changes that are faced by the skin, right? इफेक्टर्स की बात करते हैं. इफेक्टर्स मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड को रिसीव करते हैं फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स, और इफेक्टर्स के अकॉर्डिंगली उस रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंगली ये एक्शन परफॉर्म किया करते हैं, राइट? सो सेंसरी नर्व्स कौन से नर्व्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, right? And motor nerves are the nerves which carry information from the brain and spinal cord to the effectors, and effectors are usually muscles and the glands. So sensory nerves लेकर जा रहे information ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जबकि मोटर नर्व्स जो होते हैं वो रिएक्शन का जो भी मैसेज होता है उसको वापस लेकर आते हैं टूवर्ड्स द इफेक्टर्स, राइट? Here is a diagram of the human nervous system जिसमें ब्रेन के different parts दिखाए हुए हैं, different types of nerves दिखाए हैं that are present in different parts of the body, right? So we'll talk about human nervous system and its component. Human nervous system is mainly consist of central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system के भी further subdivisions हैं, और वो सब डिविजन्स क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ ऑल्सो शॉर्टली नोन एज CNS,
and it consists of brain and the spinal cord. Whereas when we talk about peripheral nervous system, that is shortly known as PNS, it consists of cranial nerves. Cranial nerves mean the nerves of the brain, and the spinal nerves that arises from the spinal cord, right? यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी नज़र आ रही ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। तो ब्रेन से अराइज होने वाले जो भी नर्व्स हैं, दे आर नोन एज कैरिनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होते हैं, दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, राइट? देयर इज अनदर डायग्राम ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाले नर्व्स की यहाँ पे डिटेल दी जा रही है, राइट? कैरिनियल नर्व्स और प्लस उनकी लोकेशन बताई जा रही है कि कैरेनियल और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स होते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है? कैरेनियल नर्व्स की बात करते हैं, दे गो फ्रॉम द ब्रेन टू आइज, माउथ, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हेड। कैरेनियल नर्व्स सर के ही मुख्तलिफ हिस्सों तक जाया करते हैं, ठीक है? सेंट्रल नर्व्स आर इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट? पेरिफेरल की बात करते हैं, दीज गोज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट। जबकि ऑटोनोमिक की बात करते हैं, these nerves go from the spinal cord to the lungs, heart, stomach, intestine and bladder, and the sense organ as well. न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन क्या चीज़ है? न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जिस तरह से हम सेल की बात करते हैं, दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इन द सेम वे, whenever we talk about the nervous system, so neuron is a basic unit of the nervous system, right? It has a body, cell body, that is known as cyton, and the cyton contains the nucleus and the साइटोप्लाज्म आपके पास डायग्राम में दिया हुआ है, न्यूक्लियस भी दिया हुआ है, और साथ में पर्पल कलर का जो साइटोप्लाज्म, दैट इज़ ऑल्सो शोन इन द डायग्राम, राइट? इट हैज़ सेवरल ब्रांचेस जो कि रूट लाइक हुआ करती है, एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज डेंड्राइट्स, and it also contain a long fiber that is known as axon, and this axon is covered by a protective sheath that is known as myelin sheath, and the junction between two neurons is known as synapse. वो जगह जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हुआ करते हैं, that point is known as synapse. Messages pass through the nerve cells in the form of केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इन केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहते हैं नर्व इम्पल्स. सो द डेंड्राइट्स, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट्स अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है थ्रू दिस लॉन्ग फाइब्रस एक्सोन, ठीक है? Here is another diagram जहाँ पे डेंड्राइट्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही, न्यूक्लियस की, सेल बॉडी की बात हो रही, एक्सोन की बात हो रही, माइलिन शीथ इज ऑल्सो देयर, राइट? And a specific type of cells are also present in the neurons that are known as Schwann cell. This name is after the name of a biologist, ठीक है, जिन्होंने इन Schwann cells को सबसे पहले डिस्कवर किया था, राइट? एंड देयर इज एक्सोन टर्मिनल. टर्मिनल मीन वो पार्ट जहाँ पे ये न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है, ठीक है? मेरे गले में बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रही है, सो आई गेस साउंड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, राइट? एनी हाउ, दिस इज शोइंग द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स. यहाँ पे एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन दिखा रहे हैं. सो हियर इज़ द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन दैट इज़ नोन एज साइनेप्स, ठीक है? और प्लस सिग्नल की डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि सिग्नल यहाँ से आएगा और फिर इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद नेक्स्ट वाले न्यूरॉन की तरफ चले जाएगा. एंड दिस नेटवर्क इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, राइट? Okay, so here is a brief introduction about the brain, that it is the main coordinating center of the human body. It is protected by cranium, skull भी जिसको कहते हैं, and it is protected by 3 layers of membranes that are known as meninx, और इन meninx के अंदर एक fluid filled हुआ करता है that protects the brain, and it also prevent the brain from shocks, right?
and that fluid is known as cerebrospinal fluid. ब्रेन के तीन मेजर पार्ट्स हुआ करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और ये सब जो है फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करते हैं. फर्स्ट वील टॉक अबाउट द फोर ब्रेन दैट कैन इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड olfactory lobes. It is the part of it is the thinking part of the brain and control voluntary action. Voluntary action mean जो हमारे अपने विश एंड विल के कंट्रोल में हुआ करते हैं, राइट. It controls the touch, smell, hearing, taste, sight, mental activities like thinking, learning, memory, and emotion. When we talk about midbrain, it controls the involuntary action and reflex movement of the head, neck, and eyes. Involuntary action means that the actions that are not in our control of wish and will, right? So the third part of the brain is known as hindbrain, and it consists of cerebellum, pons, and medulla, and commonly known as medulla oblongata, right? Cerebellum is concerned with the body movement, balance, and posture. Pons are relevant to the control respiration. Medulla oblongata controls the heartbeat, blood pressure, swallowing, and coughing, sneezing, vomiting activities, right? ब्रेन से रिलेवेंट एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी आप लोग को सेंड करूँगी, ठीक है. एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. पर इसमें आप लोग को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी नज़र आ रहा है, पॉन्स भी नज़र आ रहे हैं, दैट आर द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है. सेरेब्रम भी नज़र आ रहा है, हॉस्पिटल, पेराइटल, इन सब की डिटेल, इन सबको एक अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल, राइट. सो the second part of the nervous system is spinal cord. It starts from the brain and extends through the vertebral column. It has 31 pairs of spinal nerves that makes the peripheral nervous system. It carries messages to and from the brain. It also controls the reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन को भी हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन. सो अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट आफ्टर ब्रेन, और ये लोअर बैक तक जाती है, ठीक है, जिसको कॉक्सिजियल नर्व कहते हैं. ये टेल पार्ट, टेल लाइक पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का, ये वहाँ तक जाया करती है, पूरी बैक साइड पे ये एक्सटेंडेड हुआ करती है, ठीक है. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्स सेक्शन. थैंक यू.